आई होप हम लोग उस लास्ट फेज ऑफ प्रिपरेशन में आ चुके हैं जब हमें हमारी जो कुर्सी की जो पेटियां होती हैं वो बांध लेनी होती है, राइट। आई होप हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं और आज के इस वेबिनार में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमें हमारी लीगल रीजनिंग की क्या स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, राइट। सो आई विल जस्ट मिनिमाइज द टैब ऑफ योर questions and now I'll take up this, right? Okay. So I have divided this session in 4 parts. In first part, we will be discussing important legal topics that are very important for Clat 2025, right? And the second part, in which I will suggest you some topic on which you need to research on your own, because it is very difficult to cover in more than 10 or more than 20 topics in a single session, right? If you will give a good feedback, if you will like this session, I'll take the session on the suggested topic again, I promise, right? In third point, I will be sharing the legal reasoning tips for last 2 months and the strategy which needs to be followed on the date of examination, right? And in the fourth and the last part, I will be taking your questions, right? Whatever questions, whatever doubts you have, I will be taking up, right? So my name is Vipin and I am your legal mentor, and on behalf of Time Family, I welcome you all in this Law Manthan session, right? Okay, so let's begin this. Okay, so let's begin this session. So the first and important topic for today's session is Uniform Civil Code. We have seen this when Modi ji addressed the nation from the Red Fort on 15th of August. He mentioned that the country needs a secular code. Now, what exactly we understand or we know about the Uniform Civil Code, or we can say a secular code? Anyone who has any brief idea about what exactly it is? What is Uniform Civil Code? Will we get recording? Yes, 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 Anirudh, it is a recorded session. Don't worry about that, right? So what is Uniform Civil Code? So basically, Uniform Civil Code is a single law. It's a single set of law that is applicable. Single set of law. Just a second. Just let me set my marker. Okay. It's a single set of law governing personal matters, right? Now, personal matters are marriage, divorce, adoption, inheritance, and succession for all the citizens of India. Now, as we know that in Muslim law, the concept of marriage, divorce, adoption, inheritance, and succession is a different concept. In Hindu law, the concept of marriage, divorce, adoption, inheritance, and succession is different. So does for the Christian law. So there are certain rules and regulation in a particular religion which are very biased or unbiased towards male and biased towards female, right? For example, the practice of triple divorce, right? It was very prevalent in Muslim law, which was ultimately revoked by the Supreme Court of India, right? And the concept of Uniform Civil Code is mentioned in the Article 44 of the Indian Constitution. Now, Article 44 of the Indian Constitution is under Part 4 of the Indian Constitution, which deals with the DPSP. Now, the DPSP are the directive principles of state policy. Supreme Court में जाकर के we cannot argue that it should be enforced. For example, if one of you file a petition before the Supreme Court of India that Article 44 or Uniform Civil Code should be implemented in India, then this plea cannot be accepted, right? Why? Because DPSPs are not enforceable before the court of law. These are the directions for the state, right? These are the direction for state. Now I have a question.
हमारी कंट्री की एक ऐसी स्टेट है जहां पे ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड चलता है, राइट? टेल मी. Okay, very good, very good, very good. Goa, yes. See, Devansh, it was already in Goa, right? Portuguese brought this in 1867. In Uttarakhand, it has been recently enacted. Very good, right? So, very good, very good. You are aware. Now, however, it's important to note that this is not a legally enforceable. What I said, that you can't go before Supreme Court or High Court that okay, this has to be followed. No, this is not legally enforceable, but a guiding principle for the state, right? Now, personal law subject are marriage, divorce, inheritance come under the concurrent list. Now, what do you mean by concurrent list? There are three lists in the schedule 7 of the Indian constitution. One list that deals with the power of central government, second list that deals with the power of state government, and there is third list that deals with the power of both. So state can also make the law and central government can make the law, and that list is known as concurrent list. So personal laws are the part of concurrent list, and this is the reason why Uttarakhand was successful in enacting the Uniform Civil Code, right? Let us move forward, right? Goa, at present, the only state in India with a Uniform Civil Code. Now, as I said, Portuguese was the one who brought Uniform Civil Code in Goa in 1867. Goa was annexed in India in 1961, right? To all Goa people, irrespective of their religious or ethnic community, Uniform Civil Code is applicable. भैया वेर आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ये बेसिक जो लॉज हैं, पर्सनल लॉज हैं, वो आपके ऊपर गवर्नमेंट बनाएगी एंड दे विल बी यूनिफॉर्म एंड द एप्लीकेबिलिटी फॉर एवरीवन, राइट? नाउ what is the benefit of this? Equality under law, right? We have seen a lot of religious practices, for example nikah halala and the triple divorce. So these practices constitute violation of article 14, and article 14 talks about guarantees equality before law, right? So UCC should standardize marriage laws, एक basic standard होना चाहिए, right? Promoting gender equality and religious neutrality. Please make important note of this. This would be religiously neutral. It will not follow Hindu law. It will not follow Muslim law. It will not follow any personal law. Whatever good parts are available, it will be merged, and a common law will be enforced on every single citizen of our country, right? Recently, the 22nd Law Commission has decided to solicit the view of the public and recognized religious organization about Uniform Civil Code. So last year, what happened? The 22nd Law Commission of India asked people to express their views. What do you think about that? And all the recognized religious organizations also. But in 2018, the Law Commission said the UCC currently neither necessary nor desirable at this stage, citing the country's diversity. So this has been a basic core of argument against the implementation of Uniform Civil Code, that India is a very diverse country, right? And implementing or enforcing a single law upon everyone will go against the cultural and diversity of the country, right? I hope I'm making sense. Please, what is nikah halala? Nikah halala is something in which, for example, if a Muslim man has divorced his wife, now the wife has to wait for a certain period of time to remarry the husband, right? Suppose husband has given triple divorce to the wife. Now, even if they want to go back to the marriage, for example, if they have given divorce on a very trivial issue, and if they want to go back in their
normal or ordinary course of marriage, they have to follow certain practice and they have to wait for a certain period of time, and the practice is known as nikah halala. Am I making sense? Just let me know the answer in the question answer section. And good to see you guys in the huge strength. 48 students are live. Please let me know if I'm making a sense. Okay, very good, very good, very good, very good. Okay, nice. Now, when Supreme Court time and again has stated that भैया uniform civil code होना चाहिए, but as we know, we in our country follow the principle of separation of power. Separation of power के अंदर क्या होता है? There are three domains in our country, and three domains are: first is judiciary, right? Judiciary. Second is executive, and थर्ड इज लेजिस्लेचर. अब लॉ बनाने का काम होता है लेजिस्लेचर का, एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट करता है, एंड इफ द लॉ वायलेट्स any part of the constitution, then the judiciary come into the picture. As I earlier said, that DPSPs are for the state to follow. So basically any high court or supreme court cannot direct a particular state or particular government कि भैया आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर लॉ बनाओ. बट इन 1985 शाहबानो के केस में फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट रिकमेंडेड दैट यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए. यूनिफॉर्म सिविल कोड इज मैंडेटरी फॉर द कंट्री. इन दिस केस हस्बैंड डाइवोर्स्ड हिज वाइफ, ट्रिपल डाइवोर्स बेसिकली, एंड डिनाइड टू गिव मेंटेनेंस because under Muslim law, this topic we will also cover because Supreme Court का इस पे भी एक ruling आया है recently. So under Muslim law, the husband is barred from giving maintenance beyond the period of iddat. Anyone who has idea about iddat period? What is iddat period? Anyone who has a rough idea about iddat period? You must have, if you have 3 months period till the wife remarriage. So exactly it is not 3 months, but yes, it's a tentatively 3 to 4 months, and waiting period after marriage. Yes, it's a waiting period. Once the period is over, then only she can remarry, right? And once this period is over, the Muslim man is barred from giving maintenance to the women or divorced women. But section 125 of CRPC, right? Ab section 125 of CRPC talks about the maintenance of divorced wife. Now यार simple है, divorced wife के अंदर Muslim wife भी आएगी. तो Supreme Court said that the restriction of Muslim husband to give maintenance till the iddat period is not applicable for on section 125 of the CRPC, because section 125 of CRPC is a religious neutral point, right? क्योंकि देखो आईपीसी सीआरपीसी ये किसी का जेंडर देख करके, किसी का रिलीजन देख करके ये नहीं लगते हैं. सो इट्स अ रिलीजियन न्यूट्रल लॉ. इसके अंदर डाइवोर्स्ड वाइफ आती है, एंड डाइवोर्स्ड वाइफ मुस्लिम विमेन भी हो सकती है, राइट? सो इन 1985 शाहबानो केस में फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट आज कि भैया यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, एंड जो मुस्लिम विमेन है वो सिर्फ इद्दत पीरियड तक नहीं, उसके बियॉन्ड भी मेंटेनेंस डिजर्व करती है. सो फर्स्ट केस वेयर सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, इट वाज 1985. देन कम्स 1995. अब इस केस में क्या होता है, सरला मुद्गल केस में, व्हाट हस्बैंड, द हिंदू हस्बैंड वांटेड टू मैरी अगेन, बट हिंदू लॉ में एक ही शादी कर सकते हैं, राइट? सो ही वांटेड टू मैरी अगेन, तो ही प्लान टू कन्वर्ट हिमसेल्फ इन मुस्लिम. सो उसने सोचा कि आई विल कन्वर्ट टू मुस्लिम, जहां पे 4 वाइफ्स का रखना अलाउड है. बट सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि अगर आप, कन्वर्जन इज योर राइट, conversion is a part of your fundamental right to religion, but अगर आप किसी allurement, किसी लालच के वजह से अगर कन्वर्ट कर रहे हो तो that conversion is not good, and आपके ऊपर मैरिज के लॉज वही लगेंगे जिसमें आप पैदा हुए हो. सो फॉर एग्जांपल अगर कोई हिंदू है वो कन्वर्ट हो जाता है मुस्लिम में, तब भी वो एक ही शादी कर पाएगा. इट वाज स्टेटेड इन द केस ऑफ सरला मुदगल 1995.
right? It is a very landmark ruling in which again Supreme Court asked कि भैया यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए. Now here comes शायरा बानो केस, right? ये केसेस काफी पुराने हो गए, 1985, 1995. In 2017, Supreme Court declared the practice of triple divorce unconstitutional because it was against the right of Muslim women, right? So in 2017, the practice of triple divorce was declared unconstitutional. Government brought a law on in 2018 on the triple divorce, made a criminal offense if someone gives a triple divorce to his wife. In this case also, the debate of uniform civil code again emerged, right? I hope we are clear till now. Now the case of Uttarakhand Uniform Civil Code. Now एक चीज हमें ध्यान रखनी है, this is very important legal topic for CLAT 2025. It applies all residents of Uttarakhand, right, residing outside the state. पहली चीज, अगर आप उत्तराखंड के रेजिडेंट हो, so even if you are living in Mumbai, living in Delhi, the Uniform Civil Code is applicable on you, right? And if you are from Madhya Pradesh, Rajasthan, and living in Uttarakhand, this law is applicable on you. It is clearly written over there. It applies to all residents of Uttarakhand residing outside the state, whole Uttarakhand. लेकिन जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो इसमें एग्जेम्प्ट कर दी गई है. देखो, ट्राइबल कम्युनिटी को क्या चाहिए कि भाई हमारे जो रिलीजियस मैटर्स हैं, जो उनके एथनिसिटी है, उनके साथ देयर शुड बी नो हिंड्रेंस, देयर शुड बी नो हिंड्रेंस इन देयर culture, because for tribal community culture is everything. So whenever you will find a law related to marriage, you will majority of time you will find the exception given to the tribal community, right? The bill mandates that compulsory registration of marriage, जैसे ही आप शादी करोगे, registration of marriage within 60 days of solemnization. This provision applies to all residents of Uttarakhand, whether marrying within or outside the state. एक क्लैरिफिकेशन है यहाँ पे, ये लॉ जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लगेगा. When I say retrospective, it means कि जिनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है इस लॉ को आने से पहले, उनको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है, राइट? Got my point? Next, no marriage can be dissolved without a court order, otherwise it would attract imprisonment of 3 years. यहाँ पे अब इन्होंने क्या किया है, they indirectly यहाँ पे इन्होंने practice of triple divorce, instant divorce, जो मुस्लिम लॉ में it is very prevalent, they want to prevent it, right? Because in Hindu law, a divorce has to be taken. Before taking divorce, you have to file a petition before court. Court will consider conciliation, and so many process has been given in the Hindu Marriage Act, right? Now, the controversial point. All live-in relationship within the state jurisdiction, when I say state jurisdiction, those who are living in state, will have to be registered compulsory, regardless of whether the concerned man or women are resident of Uttarakhand or not. Partners can terminate the relationship only by submitting a formal statement to the same effect. Now, this is a very challenging point from a legal point of view. Now, what we understand by live-in relationship? So, live-in relationship is a sort of domestic relationship जहां पे मेल एंड फीमेल एक साथ रहते हैं. देयर आर सर्टेन कंडीशन, और एनी चाइल्ड born out of the wedlock of this relationship is considered as a legitimate child, right? First. Second, अगर मेल मेंबर फीमेल को डिजर्ट करता है लिव इन रिलेशनशिप में, तो फीमेल एक मेंटेनेंस को डिजर्व करती है, right? So it has been clarified by the Supreme Court of India already back in 2010. Now, next point, the bill ensures equal property rights for son and daughter. It's a good provision, right? It talks about equality, including illegitimate child, right? So adopted child and those born through surrogacy, assisted reproductive technology. So यहाँ पे जो
प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के सन एंड डॉटर को इसमें इंक्लूड किया है, और इन्होंने डायमेंशन को काफी ब्रॉड कर दिया है. जस्ट अ सेकेंड. यस sir, it is applied to abroad also. Yes, see, if you are living outside, but see, technically yes, legally yes, but technically it is not possible, Gaj. Why? Because if you are living in let's say abroad, you are living in London, so you want to be married in London, right? You will go according to the laws of London. So if you come back in Uttarakhand, then only they will ask you for the formal declaration, right? So resident, there is a difference between resident and someone who is coming to visit for a temporary period of time, right? Now next, so अब इसमें विमेन को एक कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए हैं डाइवोर्स के लिए. व्हाट राइट्स आर देयर? कि एक फीमेल डाइवोर्स ले सकती है इफ द हस्बैंड हैज फाउंड गिल्टी ऑफ रेप और एनी काइंड ऑफ अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस, राइट? इफ द हस्बैंड हैज मोर देन वन वाइफ. यहां पे इट क्लियरली goes against the Muslim personal law. Muslim personal law clearly says that कि यहाँ पे 4 वाइफ्स हो सकती हैं, बट यहाँ पे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड दैट हैज बीन इनेक्टेड बाय उत्तराखंड क्लियरली सेज दैट कि वाइफ और हस्बैंड एक ही हो सकता है, राइट? सो अगर हस्बैंड के पास मल्टीपल वाइफ्स हैं, सो विमेन डाइवोर्स ले सकती है, राइट? आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर. कोई डाउट? एनी डाउट? प्लीज रेज, से यस, ओके, समझ में आ गया, यस. Anyone got this point? Okay. In live-in relationship, will female partner is eligible for alimony? Yes, alimony is part of my. No, maintenance is different thing. See, the live-in relationship is not a part of Hindu Marriage Act or any legally wedded part of thing. It is a part of Domestic Violence Act. You must have heard about Domestic Violence Act. So in Domestic Violence Act, the concept of maintenance has to be given, and the maintenance is applicable to marriage and any relationship that is in the nature of marriage. So live-in relationship has been inserted in this, the relationship in the nature of marriage, right? So not alimony, but yes, maintenance, sir. If the child born through live-in relationship be considered legitimate, right? The child is considered as legitimate, right? So any child born out of the wedlock of the live-in relationship is considered as legitimate, right? So this is very, very important topic for Clat 2025. Now, second topic. Supreme Court condemns bulldozer justice. Now, बुलडोजर जस्टिस से हम लोग क्या समझते हैं कि यार जब भी कोई ऑफेंस होता है, पर्टिकुलरली इन द स्टेट ऑफ यूपी, इन मध्य प्रदेश, इन राजस्थान, सो व्हाट हैपेंड व्हेनेवर अ पर्सन हैज बीन मेड एक्यूज, उसकी इलीगल प्रॉपर्टी को डिमोलिश कर देती है सरकार. अब देखो, सुप्रीम कोर्ट ने कंसर्न ये एक्सप्रेस किया है कि यार इलीगल प्रॉपर्टी को यू कैन डिमोलिश, बट देयर हैज टू बी अ ड्यू प्रोसेस. आपको उसको नोटिस देना पड़ेगा. यार देखो, एक फैमिली, देयर आर 5 मेंबर्स इन अ फैमिली, एंड इफ वन ऑफ देम इज एक्यूज, punishing remaining 4 is not justified. Even if the property is illegal, serve them a notice, let them vacate the premises, and even after serving the notice, if they do not vacate, then you have right to demolish the property, right? So what Supreme Court has said? Supreme Court has disapproval over bulldozer justice where house of accused individual are demolished. Supreme Court stated no property can be demolished just because the accused is involved in criminal offenses. Even if he is convicted, still it can't be done without following the procedure as prescribed by law.
नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है यू हैव टू गिव चांस टू द अदर पार्टी, उसको रिप्रेजेंट करने दो कि भाई आपने इलीगल प्रॉपर्टी क्यों बनाई, राइट? वाई एन एक्शन शुड नॉट बी टेकन अगेंस्ट यू, हम आपको 15 दिन का टाइम दे रहे हैं, आप अपना सामान खाली कर दो, अदरवाइज वी विल डिमोलिश दिस, this is called due process, right? So before any demolition are carried out, express the need of national wide guidelines. So supreme court ने बोला है कि यहाँ पे guidelines होनी चाहिए, and till october till october the bulldozer justice has been stopped by the supreme court of india, right? This passage can be a part of your cr in legal reasoning, so always think legally, do not think from your heart while solving the questions of legal reasoning, because you have to apply logic, not your emotions, right? So think like a lawyer कि भैया natural justice का there has been violation, right? Due process has not been followed, illegal property को demolish करना है, there is no doubt with respect to that, but follow the due process and follow the natural justice, right? So इसको, this is a very important topic, हमें इसके surrounding में जितनी भी चीजें हैं we have to make note of that. Done? Should we move forward? Okay, should we move forward? Okay, great. Let's move forward. Now, new criminal laws, most anticipated, most important topic for Clat 2025. We used to follow IPC, CRPC, Indian Evidence Act that were enacted by Britishers, right? CRPC we enacted in 1973, but IPC and Indian Evidence Act we have been following since the time of Britishers, right? So they were very outdated. So हमको current affair के point of view से पता होना चाहिए कि इनकी enforcement date है 1st of July 2024. नाम याद रखने हैं, भारतीय न्याय संहिता, दिस हैज रिप्लेस्ड आईपीसी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दैट हैज रिप्लेस्ड सीआरपीसी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, दैट हैज रिप्लेस्ड इंडियन एविडेंस एक्ट. नाउ क्या ऑब्जेक्टिव है? रिप्लेस करना है कॉलोनियल एरा पनिशमेंट्स को विद अ जस्टिस फोकस्ड अप्रोच, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन पुलिस इन्वेस्टिगेशन एंड कोर्ट procedure. Now, mob lynching. Now the concept of mob lynching. अब यहाँ पे important जो नई चीजें insert की गई हैं, we will discuss only them. So section 103 of the BNS talks about when a group of 5 or more person. So सबसे पहले minimum 5 लोग होने चाहिए. Acting in concert commits murder. Second important thing, there should be a murder. And murder on the ground of race, caste, community, sex, place of birth, language, personal belief, or any other similar ground. Each member of such group shall be punished with death or with imprisonment of life, shall be liable for fine as well. Now, देखो, अगर 3 लोग मिलकर के किसी का मर्डर कर देते हैं जस्ट बिकॉज वो पर्सन साउथ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन है, नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता है, ट्रांसजेंडर है, फीमेल है, तो वो मॉब लिंचिंग नहीं होगा, बिकॉज वी नीड मिनिमम 5 पीपल, राइट? एंड अगर देर आर 6 पीपल एंड इंस्टेड ऑफ किलिंग वो स्लैब वगैरह कर देते हैं और मारते नहीं है, राइट, देन ऑल्सो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ मॉब लिंचिंग. और अगर 5 से ज्यादा लोग मिलकर के इफ दे कमिट मर्डर विदाउट एनी रीजन, लाइक just they wanted to commit robbery or डकैती, they kill the person, they don't know the name of the person, they don't know the community of the person, there is no discriminatory ground, then also it will not be considered as a mob lynching. So first thing, there must be 5 people. Second, there should be a murder. Third, the murder must be on the basis of race, caste, community, sex, place of birth, language, personal belief as well, right? So each member
of the group, each member, irrespective of his or her role, will be punished with death sentence or with life imprisonment. Right? So one of the important point for BNS, Bharatiya Nyaya Sanhita, is mob lynching. Right? Is this clear for everyone? Okay. Okay. Is this clear? Next, false promise to marry or employment. Please make sure कि इसमें रेप की बात नहीं हो रही है, मतलब एक रेप का एक अलग ऑफेंस है, राइट? और एनी पर्सन who involves in a sexual relationship, sexual activity on the false promise of marriage or deceitful means. The law addresses situation where a man deceives a woman into having sexual intercourse by making false promise, such as marriage or employment without any intention of fulfilling them. So I'll give you two situations. The first situation where the man only wanted to fulfill his lust and he committed to a girl that I will marry you, and he both involves in the sexual activity, and later on boy refuses to marry. Will this be an offense? Yes or no? Will this be an offense? Will this be an offense? Please let me know in the chat box. Hello, am I audible? Will this be an offense under this provision? Okay. Okay, next. Now, so the second situation is that where a boy commits to marry a girl, both of them willfully enters into sexual activity, but later on, due to some caste factor, due to some issues beyond the control of the boy, leads to the fall of their relationship, and they could not marry. Will this be an offense under this provision? No, this will not be an offense, because the intention of the male is very crucial, right? So intention of the male is very crucial. So first thing, deceitful means false promise. If the promise is genuine, he cannot be punished for the offense. Making a promise to marry or offering false inducement without any intention to fulfill them, this will be an offense under this, right? Let me just see the, okay. Okay, great. Yes, it was a crime. Will rape be included? See, Manya, the section 64 deals with the rape, definition of rape. So, पहले क्या होता था under IPC? It was considered as a separate, or एक all together it was a separate segment जिसको deal करना होता था court को. So what Parliament has done, they have made a separate offense altogether, right? So rape is still there under section 64 of Bharatiya Nyaya Sanhita, and this they have made a separate offense जहां पे sexual activity is willful, but लड़के के intention नहीं होते. Sir, suppose there is an intention of boy to marry, but his family does not want to him to marry the girl. Is he liable? No, Gaj. As I said, he is not liable because of the simple reason, because the promise was not false. He had no intention to deceive the girl, right? So this is the point. Got it? Great. So many familiar names from last year, right? Okay, now zero FIR. What do we mean by zero FIR? Zero FIR का एक कॉन्सेप्ट, ये मणिपुर में काफी ज्यादा ये इशू हाईलाइट हुआ था जीरो FIR का.
So zero FIR is an FIR that is registered any police station. भाई जहां भी ऑफेंस हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ऑफेंस हुआ है तुम्हारे साथ भोपाल में एंड यू आर लिविंग इन इंदौर, आप इंदौर में आकर के अपने पेरेंट्स को बताते हो कि दिस हैज बीन कमिटेड विद मी, so you have the option of filing an FIR in Indore itself. However, Indore has no jurisdiction on this matter क्योंकि क्राइम तो भोपाल में कमिट हुआ है, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो FIR अलाउ करता है कि भैया जो भी पुलिस स्टेशन आपके पास में है, irrespective of the jurisdiction, irrespective, it is written irrespective of jurisdiction, when a receives a complaint regarding of a cognizable offense, वहां पे आपको FIR लॉन्च कर लेनी है। यहां पर क्या होता है, इसको जीरो FIR क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी FIR लिखी जाती है, नो रेगुलर FIR नंबर इज असाइंड एट दिस स्टेज, वो लोग जीरो FIR लॉन्च कर लेते हैं और जो फॉर्मेलिटीज होती हैं उसको वो आगे जो जिस पुलिस स्टेशन के पास जुरिस्डिक्शन है, फॉर दैट एग्जांपल हम लोग भोपाल वाले को इंदौर की पुलिस उसको हैंड ओवर कर देगी। आफ्टर रिसीविंग द जीरो FIR, द रेवेनेंट पुलिस स्टेशन रजिस्टर्स अ फ्रेश FIR, स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। सो अब ये मैटर किसके पास चला जाएगा, भोपाल पुलिस के पास। इट मीन टू हेल्प विक्टिम ऑफ सीरियस क्राइम, स्पेशली women, children, to lodge a complaint quickly and conveniently without having to go from one police station to another। अब यूजुअली पुलिस वाले क्या बोलते थे कि भैया हमारा मैटर नहीं है, वहां जाओ। इतने में क्या होता था कि समटाइम्स द डिले जो होता है वो मेडिकल एग्जामिनेशन में फटल प्रूव हो जाता है, राइट। सो सपोज इफ अ फीमेल इज अ विक्टिम ऑफ रेप, सो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन एज सुन एज पॉसिबल होना चाहिए, एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस, राइट। सो पुलिस क्या करेगी कि तुम वहां जाओ यहां जाओ, इसमें डिले हो जाता है। इट ऑल्सो मीन टू इंश्योर दैट एविडेंसेस विटनेसेस आर नॉट लॉस्ट और टेम्पर्ड with due to delays in filing the complaint. It is transferred to the relevant police station where the offense has taken place or where the investigation has to be conducted. So zero FIR, again it is very important topic for Clat 2025, right? I hope we are clear till now. Yes, Gaj, very good. In 2013 जस्टिस वर्मा कमेटी जो निर्भया गैंगरेप के बाद बनाई गई थी, उसने कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो FIR को रिकमेंड किया था, लेकिन अभी BNS में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है एंड ये बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई थी ड्यूरिंग द मणिपुर इशू, राइट। ग्रेट। नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्राइबरी फॉर वोट। अब देखो इन 1993 में क्या हुआ, let's understand from this case only। 7 judge say bribery for vote case say SC stays MLA MP not immune from prosecution, right। in 1998 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था कि पार्लियामेंट प्रिविलेज एक्सटेंड करते हैं कि अगर पार्लियामेंट के अंदर कोई पर्सन ब्राइब लेता है, फॉर एग्जाम्पल एक प्राइम मिनिस्टर है, लेट सपोज XYZ, उनको लगता है कि यार मेरे अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया है एंड मेरी सरकार गिर सकती है, तो ही आस्क्ड मी कि मैं आपको इतने करोड़ रुपए दे दूंगा, आप मुझे वोट दे देना। तो मैंने उनसे पैसे ले लिए, बेसिकली ब्राइब, राइट, इन ऑर्डर टू सेव हिज और हर गवर्नमेंट। सो इसको सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि इट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज और इसको हम लोग प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकते। मेरे ऊपर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर, MLA के ऊपर ब्राइबरी का केस और हम लोग नहीं लगा सकते, राइट। सो ये जो जजमेंट आया है रिसेंटली, उसमें एपेक्स कोर्ट हैज ओवररूल्ड इट्स 1998 जजमेंट फेमसली नोन एज JMM ब्राइबरी केस व्हिच ग्रांटेड इम्यूनिटी टू सच लॉ मेकर्स। अब हुआ क्या था 1999 में, झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन को कुछ पैसे मिले PV नरसिम्हा राव की साइड से टू सेव हिज गवर्नमेंट फ्रॉम नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब उस केस में अपेक्स कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने 3/2 मतलब 5 जजेस थे वहां पे, जिसमें से उन्होंने इम्यूनिटी ग्रांट कर दी कि इनके ऊपर कोई केस नहीं चलाया जा सकता क्योंकि ब्राइब लेना पार्लियामेंट के अंदर इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री privilege। It was very controversial judgment which finally has been overturned by the 7 judge bench of the Supreme Court of India।
राइट। बैकग्राउंड ऑफ द प्रेजेंट केस, अब हुआ क्या, एमएलए फ्रॉम जेएमएम कोइंसिडेंटली ये भी उसी पार्टी की हैं, सीता सोरेन। इन्होंने क्या किया, शी वाज एक्यूज्ड ऑफ एक्सेप्टिंग अ ब्राइब इन रिटर्न ऑफ हर वोट फॉर अ कैंडिडेट ड्यूरिंग 2012 राज्यसभा इलेक्शन। शी मूव्ड बिफोर द हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट, क्वेश्चनिंग द चार्जशीट एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग साइटिंग 194, राइट। 194 बात करता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज फॉर एमएलए, बट हाई कोर्ट ने उसको रिलीफ नहीं दिया, तो उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील फाइल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली इस बार बोल दिया, द कोर्ट स्टेटेड दैट द ब्राइबरी इज कंसिडर्ड कंप्लीट। अब ब्राइबरी कब कंप्लीट हो जाएगी, याद है, याद करो कॉन्ट्रैक्ट की क्लासेस, वंस यू हैव एक्सेप्टेड द प्रपोजल, right, the court stated that bribery is considered complete once the offer or agreement to bribe is made, regardless of whether the vote is cast in the agreed direction or if the vote is cast at all। हमको फर्क नहीं पड़ता आपने वोट दिया, किसको दिया, नहीं दिया, जैसे ही आपने बोला कि ओके मुझे पैसे दे दो, आपने ब्राइबरी कमिट कर दी, और इसको हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का पार्ट अब नहीं मानते, राइट। नाउ no immunity from, the highlight of this judgment, no immunity from on the charges of accepting bribe। अब देखो आर्टिकल 105 बात करता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की, एंड 194 बात करता है एमएलए के लिए। एक्सेप्टिंग ब्राइब डू नॉट पर्टेन टू द ड्यूटी ऑफ लॉ मेकर। अब देखो यार, जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है ना, वो लॉ मेकर को उनकी ड्यूटी करने के लिए बनाया गया है। अब ब्राइब लेना इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ड्यूटीज ऑफ अ लॉ मेकर। It will create threat to the functioning of Indian parliamentary democracy, right? Bribe, accepting bribe is a separate crime, right? Lawmaker का कोई काम नहीं है bribe लेने का। So ये 3 पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किए, और इसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि accepting bribery or committing any crime inside the parliament is not immune। अब पार्लियामेंट्री प्रिविलेज होते क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड। Parliamentary privilege are special rights, immunity, and exemption enjoyed by the member of parliament and MLAs as well. So Article 105 talks about the member of parliament, and 194 deals with the MLAs. Freedom of speech, right? Freedom of speech in parliament, immunity, अगर उनको सिविल केसेस में, ध्यान रखना, सिर्फ सिविल केस में उनको अरेस्ट नहीं कर सकते। फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, उनको विटनेस देने के लिए नहीं बुला सकते कोर्ट की किसी भी प्रोसीडिंग में, इट इज रिटन ओवर देयर। और सिविल केस में उनको अरेस्ट नहीं कर सकते, कितने, 40 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द सेशन, पार्लियामेंट सेशन, एंड 40 days आफ्टर इट कंक्लूजन। ध्यान रखना, क्रिमिनल एक्टिविटीज, क्रिमिनल केस अगर मैंने कर दिया है तो मुझे अरेस्ट किया जा सकता है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज सिर्फ और सिर्फ सिविल केसेस में मुझे अरेस्ट होने से बचाता है, राइट। Done? Any doubt till now? Sir, in which committee the zero FIR was brought? Kanika, the committee, Justice Verma committee, जो निर्भया गैंगरेप के बाद बनाई गई थी, जस्टिस वर्मा कमेटी, उसने रिकमेंड किया था कि जीरो FIR होती है। मान्या सेक्शन 173 ऑफ BNS में है, बट BNSS में है, लेकिन हमारे लिए इररिलेवेंट है सेक्शन, राइट। हमें प्रोविजंस नहीं पढ़ने हैं, राइट। सर इट मींस नाउ दे कैन बी प्रोसिक्यूटेड नाउ, यस। अब आज की डेट में अगर कोई भी लॉ मेकर ब्राइब लेता है वोट देने के लिए, उसके ऊपर ब्राइबरी के चार्जेस लगाए जा सकते हैं, और वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का डिफेंस नहीं ले सकता। क्लियर यहां पे सबको? एंड दे आर इम्यून फ्रॉम सिविल बट नॉट फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी। ऋषिका, जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ द सेशन is starting from 1st of January to 31st of January. In civil case, he cannot be arrested 40 days before the 1st of January and after 31st of January. So immunity is very limited in case of civil as well. But yes, in case of criminal case, he can be immediately arrested. Got the point? Clear हुआ doubt? Rishika? Kanika, Rishika, done? Okay, great. Now next,
Supreme Court verdict on the right of maintenance of Muslim women. I have already discussed this. Now, there is a recent judgment in which Supreme Court has clearly stated that Section 125 of CRPC. अब देखो Section 125 of CRPC जो है, that deals with the maintenance. Maintenance to whom? Wife, divorced wife, till the time she remarries, daughter जब तक वो शादी नहीं करती, son till the age of 18, and elder parents, right? So Section 125 of CRPC is gender neutral, religion neutral. It is applicable on every people who are living in our country. जिसके ऊपर भी CRPC और IPC का jurisdiction लगता है, including, I said, including Muslim. Now this is a section of 144 of BNSS, right? BNSS. अब हुआ ये कि मुस्लिम मैन ने चैलेंज किया तेलंगाना हाई कोर्ट डायरेक्टेड टू पे इंटरिम मेंटेनेंस टू हिज फॉर्मर वाइफ. ही कंटेंडेड दैट मेंटेनेंस, अब देयर इज अ लॉ, मुस्लिम प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986. ये लॉ 1986 में बनाया गया था. ये रिस्ट्रिक्ट करता है मुस्लिम विमेन के राइट को, मेंटेनेंस को, टिल द पीरियड ऑफ इद्दत. लेकिन वाइफ के पास अगर ऑप्शन है कि वो ऑप्शन 1 चूज करेगी या ऑप्शन 2 चूज करेगी, तो यार बेनिफिट तो उसको ऑप्शन 2 में है, सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी. नाउ वन सेक्शन, सेक्शन 144 ऑफ बीएनएसएस. Why will she go in Muslim women protection of rights on Divorce Act 1986, where she will get maintenance till iddat period only? So Supreme Court clarified that it is up to the Muslim women, even if she files a case under section 125 of CRPC, or for example, for let's say section 144, she will get maintenance under these provisions, irrespective what Women Protection of Rights on Divorce Act 1986 says. Right? Clear? Is there any doubt? Sir, can you explain when the person will be liable for bribery and when not? See, Krishna, as soon as you accept, see, you must recall your class of contracts. If I am offering you, will you take, suppose you are a government officer, Krishna, and I am offering you 10,000 rupees to do my task. As soon as you say, okay, I will do this, give me 10,000 rupees, you can be prosecuted for the offense of bribery. Right? So bribery is complete when you agrees to accept it. Agreement itself is an offense of bribery. Okay, Manya, I'll explain. Right? So Muslim Supreme Court has clarified again that there is a law, Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act 1986. अब ये लॉ बात करता है कि मुस्लिम विमेन को जो मेंटेनेंस है वो मिलेगा टिल द पीरियड ऑफ इद्दत ओनली. राइट? लेकिन यहां पे एक प्रिवेलिंग सेक्शन है, सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, जो बात करता है कि मुस्लिम विमेन को एक डाइवोर्स विमेन को मेंटेनेंस मिलेगा जब तक वो शादी नहीं करती दोबारा. तो यार देखो, इद्दत पीरियड तो 3 से 4 महीने में खत्म हो जाएगा. लेट सपोज अगर एक मुस्लिम विमेन है 4 साल के बाद रिमैरी करती है, तो क्या वो उस रिमेनिंग पीरियड में विल शी बी विदाउट एनी मेंटेनेंस? विल शी बी एबल टू सस्टेन? नो. बट सेक्शन 125 विल बी देयर फॉर हर रेस्क्यू. So section 125 of CRPC is applicable on every woman irrespective of her religion, right? So this is a very female oriented law, female favorable law, rather than Muslim Women Protection Act, which restrict the right of Muslim women till iddat period on. Clear? Clear? Okay. Okay, just let me. Okay. Next. Now let's understand pre 1986 thing. जो शाहबानो, सी व्हाट हैपेंड, जो शाहबानो केस आया 1985 में,
उसकी रूलिंग थी कि मुस्लिम विमेन को मेंटेनेंस मिलेगा टिल द टाइम शी रीमैरिज, इररेस्पेक्टिव। उसमें इद्दत पीरियड का जो बार था इट वाज ओवरटर्न, बट उसको इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरटर्न करने के लिए राजीव गांधी गवर्नमेंट इस लॉ को लेकर के आई थी, मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट, राइट। When Supreme Court delivered this historical judgment known as Shah Banu case, in this Supreme Court said that no, Muslim women can claim maintenance till the time she remarriage। भाई ये क्या होता है कि आप सिर्फ 3 महीने तक मेंटेनेंस दोगे? सो इससे जो मुस्लिम के जो ऑर्थोडॉक्स पीपल थे वो काफी एजिटेटेड थे। So in response to that, Muslim Women Protection Act was enacted by the Rajiv Gandhi government। इन्होंने फिर बोला, it is clearly overwritten, in response to Shah Banu case, the Indian Parliament enacted Muslim Women Protection of Rights of Divorce Act, providing a specific mechanism for divorce। अब इन्होंने क्या किया? अगेन मुस्लिम विमेन का राइट रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इट restricted the maintenance period to iddat period and tied the amount to the meher and dowry given to the women। So जो शाहबानो में बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन एक्ट ने उसको ओवरटर्न कर दिया, right? So iddat is a period usually of 3 months which a woman must observe after the death of her husband or divorce before she can remarry। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एंड अगेन क्लैरिफाई कर दिया है कि भैया ये मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन एक्ट है वो रिस्ट्रिक्ट करता है, बट सेक्शन 125 हमेशा इट विल ऑलवेज बी देयर फॉर द रेस्क्यू ऑफ अ मुस्लिम विमेन, राइट। डेनियल लतीफी, अगर हम लोग बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इन 2001 ऑल्सो द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 1986 वाला एक्ट तो ठीक है, बट एक्सटेंडेड द राइट ऑफ मुस्लिम विमेन टू गेट मेंटेनेंस टिल शी रीमैरिज। सो जो अभी रिसेंट जो जजमेंट आया है, इट हैज ओनली रीअफर्म द जजमेंट ऑफ 2001। The court ruled that Muslim husbands are liable to provide maintenance to their divorced wife beyond the iddat period till she remarries। So what Supreme Court exactly has done this time? They had just reaffirmed, hey भैया भूल तो नहीं गए ये, मैम we have said this in 2001 as well, right? Interpretation of section 3 1986, so we have already discussed this। जो सेक्शन 3 है वो रिस्ट्रिक्ट करता है लॉ को, women को, to get the maintenance only till the time of iddat period। So basically this law violates section article 14, 50 and 21 of the Indian Constitution। So basically if I have to summarize this, maintenance under section 125 of CRPC, इसके अंदर every single woman, be it Muslim, be she Hindu, Christian, she can claim maintenance till the time she remarries। Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act 1986 cannot restrict the right of a female, Muslim female, to iddat period only, right? So this is a very insignificant law if I have to say in a single line। Done? Any doubt? Any doubt? So can you explain this again? Just a second। Okay, any doubt in this? Done? एक बार चैट बॉक्स में यस यस, ओके ओके ओके, डन, क्लियर, ओके। ऋषिका डन? ओके, ग्रेट 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 ग्रेट, इंटरेस्टिंग थिंग अवेटिंग फॉर अस, ठीक है, ओके। नाउ अब बात करते हैं यार पब्लिक एग्जामिनेशन। नीट की जो कंट्रोवर्सी हुई, पेपर लीक हुए, यूजीसी नेट का पेपर लीक हो गया, तो पार्लियामेंट ने सोचा कि लेट्स इनेक्ट अ लॉ, राइट। सो आपको क्या करना है, एक इसका बस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना है, राइट। सो पब्लिक एग्जामिनेशन, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं पब्लिक एग्जामिनेशन की, नॉट प्राइवेट एग्जामिनेशन। इन्होंने फाइव पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटीज को हाईलाइट किया है। सो यूपीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट कराती है, एसएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट कराती है, आरआरबी जो भी एग्जाम कंडक्ट कराती है, आईबीपीएस फॉर एग्जांपल एसएससी एग्जाम कराती है, हम लोगों ने सुना है कभी बहुत एग्जाम्स कराती है एसएससी। आईबीपीएस जो बैंकिंग रिलेटेड एग्जाम कराती है,
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो जेई कराती है, नीट कराती है, यूजीसी नेट कराती है, राइट, एंड जो मिनिस्ट्रियल एग्जाम्स होते हैं, राइट, ये 5 पब्लिक अथॉरिटीज इन्होंने रखी हैं। सो आपसे जीके में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितनी अथॉरिटी रखी है, हाउ मेनी अथॉरिटीज आर देयर, 5 अथॉरिटीज आर देयर, लिस्ट आउट द अथॉरिटीज। एमसीक्यू में दे कैन आस्क यू द क्वेश्चन विच इज नॉट अ अथॉरिटी। सर क्लैट कौन कराता है बेटा, मुझे पता था दिस विल कम। क्लैट कंसोर्शियम कराता है, एक बॉडी है एनएलयूज की जो इसको कराता है। सर कैन यू एक्सप्लेन डेनियल लतीफी केस? लक्षिता, डेनियल लतीफी केस जो अभी रिसेंटली व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेटेड, what Supreme Court has recently stated ना कि भैया Muslim women can claim the maintenance till the time she remarries. So Muslim Protection Act doesn't bar her from claiming maintenance beyond that period. It was said in Daniel Latifi in 2001. So Supreme Court has reaffirmed the judgment of 2001 only. Clear, Rishika? क्लैट कंसोर्टियम कराता है, राइट, कई बार इसको चैलेंज हुआ है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बट क्लैट इज अ डिफरेंट एग्जाम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अनफेयर मीन्स क्या होते हैं? अनफेयर मीन क्या होते हैं भैया? लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर को लीक करना, आंसर की को लीक करना, पार्टिसिपेट किसी भी कोल्यूजन करना जो अफेक्ट करता है, अगर आप पार्टिसिपेट भी कर रहे हो, राइट, एक्सेसिंग क्या, क्वेश्चन पेपर को एक्सेस करना, ओएमआर को एक्सेस करना, रिस्पॉन्स शीट विदाउट अथॉरिटी, providing solution to one or more question. Please remember, if you are planning to appear for UPSC, अगर आप अपने पास वाले को एक क्वेश्चन भी बताते हो, right, so it would be considered as an unfair means by any unauthorized person during a public examination, directly or indirectly assisting the candidate in any manner unauthorizedly in public examination. तो ये सब unfair means है। टेम्परिंग विद आंसर शीट, राइट, ओएमआर के साथ टेम्पर करना, विलफुल वायलेशन, अगर कोई नॉर्म्स हैं, स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर एनी एग्जामिनेशन, अगर आप उसको तोड़ते हो तो उसको अनफेयर मींस कंसीडर किया जाएगा। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच कैन बी कंसीडर्ड अनफेयर, बट जस्ट अ समरी, दिस इज नॉट exhaustive but inclusive list, right? Next, now what is the punishment? Punishment is, it is a cognizable offense, right, non-bailable and non-compoundable offense. Any person on or person resorting to unfair means shall be punished with imprisonment minimum 3 years, which may extend to 5 years, and fine up to 10 lakh rupees. So this is very important for us. So punishment has been prescribed. Any doubt? Sir, can you repeat the previous slide? Shreya, sure. Just a second. Please, you can take the screenshot if you want. Done? Shreya, done? Okay, let's move forward. Now, last topic for this, उसके बाद हम लोग we will discuss what I said. West Bengal Aparajita anti-rape bill. As I said in first slide, there are certain laws which are the part of concurrent list. Criminal laws are also part of concurrent list. So state government can make certain amendments according to the situation. We have seen कि वहां पे एक brutal rape case हुआ फीमेल डॉक्टर के साथ में, और उसके रिस्पॉन्स में अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड लॉ अमेंडमेंट बिल वो लेकर के आए वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट, जिसमें इट इंक्लूड्स प्रोविजंस ऑफ कैपिटल पनिशमेंट एंड द हार्शेस्ट पेनल्टीज फॉर रेप एंड सेक्सुअल हरासमेंट। तो डेथ पेनल्टी किस किस ऑफेंस के लिए रखी गई है? द बिल proposes capital punishment for individual convicted of rape if please note, if the act result in victim की अगर death cause करते हो आप, और leaves her in vegetative state, right? For example, अगर वो कोमा में चली जाती है, उसके कोई बॉडी पार्ट में परमानेंटली डैमेज हो जाता है, then you can be awarded with death sentence.
Sir, which topics will be covered further? Vaishnavi, this is the last topic. I'll suggest few topics, right? If uh, you guys will like this session, then I can take another session on that as well. There is no issue about that. Sir, Aparajita will cannot change the provision of BNS, right? Any state cannot change provisions of central law. Rishika, this is what I said, that criminal laws are a part of concurrent list. So certain amendments with respect to punishment, right? Certain, certain, not overhaul. You cannot overhaul the law enacted by the central government, but certain amendments you can make with respect to some punishment enhancement, right? Great. So अंडर बीएनएस अगर हम लोग बात करते हैं तो रेप की जो पनिशमेंट है मिनिमम 10 ईयर पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट फॉर रेप, राइट? मिनिमम 20 ईयर ऑफ imprisonment for gang rape which may extend to life imprisonment, and a minimum of 20-year rigorous imprisonment for rape resulting in the victim's death or a vegetative state with possibility of life imprisonment or the death penalty. So death penalty has been incorporated by the West Bengal Aparajita anti-rape bill, right? You can take a screenshot of this. Sir, Justice Verma, sir, Aparajita will like. हाँ, done. Also against death penalty. Yes, Rishika. See, देखो, death penalty के साथ there are certain issues because देखो, the point is the lawyer's point. What the law point says कि अगर murder की punishment भी death sentence है और अगर आप रेप की पनिशमेंट भी डेथ सेंटेंस कर दोगे, सो accused, what accused will do after committing the offense of rape, he will try to kill the female or the victim as well in order to evade the evidences or erase the evidences, right? So this is the reason why Justice Verma committee was against the death penalty for the rape offense, right? So that was the point of Justice Verma committee, right? Great, very good point. Now, what other points are there? Time bound investigation hai. Investigation into rape cases are mandated to be completed 21 days of the initial report and trial be completed within 30 days. Extensions are permissible only with written justification from senior police officer. So time bound, आपको जल्दी केस निपटाना है because we have seen justice delay is justice denied in our country. Establishment of fast track courts, जो 52 स्पेशल कोर्ट डेडिकेट की गई हैं सेक्सुअल वायलेंस केसेस को डील करने के लिए। फिर इन्होंने अपराजिता टास्क फोर्स बनाई है। द बिल कॉल्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड टास्क फोर्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल led by the DSP. Now this is a point for current affair. DSP will head this, dedicated to the investigation of rape and other atrocities against the women and children. Any doubt till now? Now, next, I'll take just, no, okay, great. Strict penalty for repeat offenders, right? अगर कोई offense को repeat करता है तो penalty will be enhanced. Protection to the victim की identity reveal नहीं करनी है, right? So the bill includes provision to the protect the identity of victim, ensuring their privacy and dignity. ये नहीं कि आप इंटरव्यू लेने पहुंच जाओ नाम लेकर के, right? So this cause a violation of her privacy and dignity. Penalty for delay in justice. अगर कोई भी पुलिस और हेल्थ ऑफिशियल डिले करता है रिस्पॉन्स करने में तो देयर इज अ पनिशमेंट फॉर देम एज वेल. पब्लिकेशन, इससे रिलेटेड जो न्यूज है अनऑथराइज्ड पब्लिकेशन, उनको भी रोका जाएगा, राइट? सो उनके नाम, उनकी फैमिली की आइडेंटिफिकेशन, उनका एड्रेस, कोर्ट में क्या कहा गया, ये सबको हमें पब्लिश नहीं करना है इन ऑर्डर टू मेंटेन द प्राइवेसी एंड डिग्निटी ऑफ द विक्टिम. डन? एनी डाउट टिल नाउ? Done? I just need a confirmation. If there is no doubt, then we will move to on the second point that I discussed, that I'll give you some topics for your own research, right? Okay, great.
Great. Now, so some more important topics for you. सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट ऑन सब क्लासिफिकेशन ऑफ SC एंड ST, ये अभी एक रिसेंट जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, राइट? वक्फ विल, है ना? यू विल फाइंड दिस ऑल दीज टॉपिक्स इन दी मॉक एज वेल, इवन इन PMLA जो अरविंद केजरीवाल को जो बेल दी गई है वो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, राइट? इन दी दिल्ली लिकर पॉलिसी केस, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था इन द मंथ ऑफ जनवरी बिल्किस बानो से रिलेटेड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वन नेशन वन इलेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आर्टिकल 370, ये जो टॉपिक है इट्स अ टेम्पररी प्रोविजन, सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया था एब्रोगेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस को जम्मू एंड कश्मीर, एंड अब वहां पे इलेक्शन भी होने वाले हैं. इलेक्ट्रल बॉन्ड केस, ऑल्दो दिस हैज बीन आस्क्ड बाय द क्लैट, बट अगेन इस साल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, कितने टाइम में हम एक फीमेल जो है वो एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से अबॉर्शन करा सकती है, मेडिकल बोर्ड क्या होता है, ऑल दिस वी हैव टू रीड, राइट? सर CPC का आर्बिट्रेशन वाला एक पैसेज था मॉक में, वो समझ में नहीं आया. ओके, ऋषिका प्लीज लेट मी नो इन दी what mock and what passage it was, so I'll talk to the concerned people to provide you the solution, right? Sir, when will you continue to take online classes? Okay. Okay, now we are done with this. ठीक है? So we have covered 5 to 6 topics, and these are some topics for you to research, right? Done. Now next, question answer. My question is, can I skip math in Clat? No, it is sin. ध्यान रखना, quantitative techniques जो होती हैं, they are the 10% part of the total marks. Less significant लगता है, but it will improve your overall rank. ध्यान रखना, it will be a 10th level arithmetic, data interpretation and logical reasoning based question. इसमें आपसे कोई quantitative aptitude नहीं पूछेगा वो. Can you take another class as well? Nivedita, sure, definitely, not an issue, right? So देखो, maths को skip नहीं करना है, because if I am getting NLIU without math, skipping math, then I'll get NLS with the help of math. And trust me, math difficult नहीं होता है, it's just a simple arithmetic, data interpretation and logical reasoning based questions उसमें पूछे जाते हैं, right? Should I avoid reading passage in current affair? This is another question. No, you can't avoid the current affair passage, because if you will go through the CLAT 2024 paper, you will find a passage related to General Dyer. So a lot of questions were solved through the help of the passage itself, right? So you can't leave the passage. Is mock analysis is important for CLAT? Yes, mock analysis are very crucial for your CLAT preparation. आपने जितने भी mock अभी तक दिए हैं, sir, currently I am scoring low in mocks. I'll just take the question, just finishing this, right, Tanika? I'll take every single question from you guys. Don't worry about that. So is mock analysis important? देखो, mock analysis से क्या होता है, आपको अपनी weakness का पता चलता है. What is my plus point? What is my strength? So for example, law is my strength. Okay. And I am lacking behind in current affair. Why? Even after reading this topic, I could not solve this particular question. It means I have not well researched this topic. And mock analysis से जो हमको सबसे important चीज सीखनी है, गलती करते हैं, mistake is a part of your preparation, but repeating the same mistake is a sin, right? So mock analysis is very important. Even in the legal reasoning, हमेशा ध्यान रखना, while solving the legal reasoning, if two options are yes and two options are no, and if your answer is yes, the option which is talking about law, not about the fact, is the correct answer, right? Remember this rule. There are two options, two yes, two no. The option which talking about law, right, that is the correct answer. What if legal passage come out of the box? Suppose you see element of surprise which usually CLAT gives a little bit. So even if you find any unfamiliar or unconventional passage, for example, let's take any topic related to IT offenses
or CPC, whatever it is. These passage typically, अब वो passage, if the passage is unconventional, it will be very easy, right? एक कहावत है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, right? So it will prima facie look very difficult, but it will test your comprehension skills. So whatever questions have been asked, you will find answers in the passage itself. So take a pause of 5 to 10 seconds. Yes, I will do it. And you will find answers in the passage itself. These passages will test your reading comprehension, logical reasoning skills, rather than your specific legal knowledge. क्योंकि देखो कंसोर्टियम की वेबसाइट पे it is clearly written that prior knowledge of law is not mandatory, not required, right? क्लैट लेवल कैसा होगा? देखो क्लैट लेवल कैसा होगा इसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता. Sir, I score less in legal and QT despite giving it time. Sir, I am currently scoring low in the okay. Now, so next 50 days you have to do these things. First, prioritize important topic. एक लिस्ट बनानी है हमें important topics की, उनको हमें prioritize करना है. First, second, whatever is your weak areas, you have to focus on your weak areas. For example, if your math is weak, you can still do it. If your current affair is weak, it means you need to read a lot, right? If your logical reasoning and legal reasoning is weak, it means you are not reading the passage correctly. Third, take mock test frequently. As you know that वीकली हम लोग 2 टेस्ट करते हैं, सो टेस्ट अपने को रेगुलरली देने हैं. डू नॉट मिस एनी टेस्ट, राइट? देयर आर सो मेनी स्टूडेंट विद दिस अजम्पशन कि 1 मंथ बचा है, आई विल लीव नाउ द मॉक पार्ट. नो, गिव मॉक, एनालाइज ऑल द मॉक, admit your mistake, admit the fact that you are a human being, you can commit the mistake, but human being, we are the human being, we learn from the mistake, and we should not repeat the same mistake again. And consistent revision is the key, right? So these 5 habits you have to develop. Consistency is key. Don't rush the process. Good things take time. Now, question answer session. Just let me pause this. Okay, am I visible? I'll take your questions. Please ask me your questions. Okay. Okay, sir, the session was really good. Okay, thank you so much. One by one, sir, when will you continue? Okay, sir, the session was really good. Thank you. Okay, sir, currently I am scoring low in mock. So are they any reflection of result in Clat? See, Kanika, result का reflection होता है mock पे, but इसको हमें psychologically बैठाना नहीं है दिमाग में कि इफ आई एम स्कोरिंग लो तो मेरा तो हो गया, अब कैसे होगा? नहीं, दिस इज नॉट अ करेक्ट थिंग, राइट? बट हाँ, क्लैट के जो पेपर होते हैं, क्लैट के जो मॉक होते हैं, वो कंपैरेटिवली डिफिकल्ट बनाए जाते हैं ताकि बच्चे को जब एक डिफिकल्ट पेपर आ जाए, सो दैट ही विल नॉट बी सरप्राइज, राइट? यू हैव स्टिल 50 days लेफ्ट, राइट? स्कोर लेस इन क्यूटी. श्रेया, क्यूटी में यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, राइट? प्रैक्टिस करनी है अपने को, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस. जो भी डाउट है हमें हमारे फैकल्टी के साथ डिस्कशन करने हैं. लीगल में द सिंपल पॉइंट इज दैट whenever you are reading the legal passage, please keep this in mind that इसका आंसर इसी पैसेज के अंदर, that is the crux of the legal reasoning passage. And if there are 2 options, then you have to abide by the law 1. सर मॉक, सर आई स्कोर मॉक 60 में है, ओनली 1 month लेफ्ट, हो जाएगा क्या? यस हिमांशी, बिल्कुल बिल्कुल. सर यू आर विजिबल. ओके सर, करंटली आई एम स्कोरिंग लो इन मॉक, आर देयर एनी रिफ्लेक्शन? नहीं, सी बिल्कुल कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होता है अपने को, अभी वी हैव टाइम. बट यस, कंसिस्टेंसी इज द की. ये नहीं कि आज मेरे मॉक में कम नंबर आए तो मैंने आज 10 घंटे पढ़ा,
कर ली, कल 15 घंटे पढ़ाई कर ली, नहीं यार, मुझे अगले 50 डेज में रेगुलरली 6 से 8 घंटे पढ़ाई करनी है. दैट विल बी द की फॉर माई सक्सेस, राइट. ऐसा नहीं होगा कि मैंने एकदम से डेस्परेट होकर के मैंने आई रीड 10 आवर्स 20 आवर्स, नो, राइट. सर, हाउ टू आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर जीके. सी, हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे समझने हैं. क्लैट 2022, क्लैट 2023, क्लैट 2024, इनके जो टॉपिक्स हैं, इनके जो पेपर्स हैं, हमें एक बार गॉन थ्रू करना है. So you will find that there are some static legal reasoning questions, for example, on contract, on torts, on constitution and criminal law. And in 2024, you will find there are certain current legal reasoning based questions, and they are not factual questions. They are just inference based, very easy questions, right? So we have to divide legal reasoning in two parts. First is your current legal awareness, and second is your static legal, right? So for static legal, हमारे पास sufficient study material है, classes हैं हमारी. For current legal reasoning के लिए हमें law grid पढ़नी है, हमें न्यूज़पेपर की हेल्प लेनी है, right? And उनके खुद नोट्स बनाने हैं. अगेन, जो पैसेज में लिखा है, हमें सॉल्यूशन क्वेश्चन को उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है. बट if I am aware, if I am familiar with the topic of the passage, then it will increase my reading habit, reading speed. So ultimately you have to give 35 to 45 minutes in legal reasoning. Apply the formula of 2 plus 1. In 2 minutes you have to read the passage, in 1 minute you have to read the and solve the question. सर, जीके में पैसेज पढ़ना जरूरी है प्रिंस? यस. अगर मैं क्लैट 2024 की बात करूं तो यस, पढ़ना जरूरी है, क्योंकि पिछली बार एक दो पैसेजेस ऐसे आए थे जिसमें उनके क्वेश्चंस के आंसर उसी पैसेज में थे, राइट. सर, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज वाज फॉर सिविल, ओनली फॉर क्रिमिनल? नहीं, ओनली फॉर सिविल. मान्या, ओनली फॉर सिविल, नॉट फॉर क्रिमिनल. Sir, where will be the recording of this session will be uploaded on your student home portal, Kirti. Sir, for legal cases, can we refer to Times of India and what we can ignore while reading newspaper? See, Times of India you can read, but instead of Times of India, अगर आप The Hindu पढ़ोगे, Indian Express पढ़ोगे, that would be better. उसमें से हमें irrelevant चीजों को छोड़ देना है. For example, गाजियाबाद में एक मर्डर हुआ, we are not concerned about that. हमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे क्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वी हैव टू रीड दैट, एंड यू विल फाइंड ऑल दीज ऑन योर फ्रंट पेज इन द एडिटोरियल पेज. सर, हाउ टू अवॉइड लूज फोकस इन मॉक टेस्ट? यस, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय माय स्टूडेंट एज वेल. हमें क्रिटिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश को साथ में सॉल्व नहीं करना है, राइट? बिकॉज यू विल बी overburdened with 60 to 64 questions of reading. So once you solve critical reasoning, solve the GK, solve the quantitative section, so you will get a pause from reading, right? Make a timetable that in 10 to 15 minutes I have to finish the GK. In 35 minutes to 40 minutes I have to finish the legal reasoning section. Because beta देखो होता क्या है, when you are giving CLAT, if you are able to solve the question, you will think that question paper is easy, and if you are not able to solve the question, you will find the question paper it is difficult. But question paper easy है या difficult है, ये question paper होने के बाद पता चलेगा. What other think about that, right? So ultimately हमें क्या करना है, हमारे माइंड को डाइवर्ट नहीं होने देना है at the time of while giving CLAT. हमें मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बिकॉज आई एम नॉट अवेयर कि जो मेरे पास वाला स्टूडेंट है उसके कितने सही हैं, उसके कितने गलत हैं, राइट? सो इफ इट इज इजी फॉर एवरीवन, इफ इट इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन. बट हम लोग इजी एंड डिफिकल्टी की बात बाद में करेंगे. उस टाइम पे 2 घंटे में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर, OMR और मैं और मेरा दिमाग. That's it. Sir, can we have similar classes for most important current affairs topics? Janvi, for sure. At times in legal section, good. I am having problem at my school. Exams was going on, and I have a lot of backlog. And my student also not doing well, and my logical reasoning is also very bad. See, Abhishek, logical reasoning, you have to read a lot. You have to read a lot. You have to practice a lot.
है ना, फैकल्टी के साथ डिस्कशन करना कि वाई योर लॉजिक इज इनकरेक्ट। लॉजिक किसी का गलत नहीं होता है, बट जो क्लैट कंसोर्टियम में जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व पैटर्न बना रहा है, उसके लॉजिक के क्लोज पहुंचना है हमको, राइट। लॉजिक किसी का गलत नहीं होता है, बट करेक्ट, अगर मुझे एक स्कोर लेना है, अगर मुझे एक नंबर लेना है, तो मुझे कंसोर्टियम के लॉजिक पे पहुंचना पड़ेगा, राइट। सर द सेशन वाज रियली गुड, आई हैव प्रॉब्लम दैट माय स्कूल, ओके। Next. Sir, what should be the minimum average score for now? जी हाँ, there is no minimum average. Don't worry about that. ये psychological fact अपने दिमाग से हमें निकाल देने हैं. What is minimum? What is maximum? No, it depends entirely on mock. If you will see in CLAT 2024, the cutoff was around 85 to 86 out of 120 because the paper was slightly easy. And in CLAT 2023, out of 120, 150 question, the cutoff was 70 to 75. So it entirely depends on the paper. It entirely depends on the difficulty and the length of the paper, right? So don't think about average score, low score. Sirf 50 days, single focus on the preparation, right? Any other doubt? ठीक है? If you okay, sir, doing sample paper will be benefit for, देखो sample paper में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्लैट हर बार सैंपल पेपर देता है, एंड पेपर, एक्चुअल पेपर इज वेरी ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम द सैंपल पेपर, यस, बट हमें एक आइडिया लग जाता है, वी गेट एन आइडिया। सैंपल क्वेश्चंस हैं वो, कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, दैट दे आर आस्किंग इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन, आई विल गेट द सॉल्यूशन फ्रॉम द पैसेज इटसेल्फ, right? They have asked question from the Olympic, right? They have asked question on the current legal, current affair passage they have given. So this is just an indication that this is how this will your paper look like. हमें ज्यादा deviate नहीं होना है, right? So suppose CLAT consortium has taken one passage from UPSC CSET paper, so we don't need to follow the every single CSET paper of UPSC. No, just a sample indication how the CLAT question will exactly look like. Sample, so sir, which year do we have to take as a sample paper? CLAT 2022, 23 and 24 beta, right? Krishna, you got it? Sir, at times in legal section, two options seems to be correct. How to identify most appropriate one apart from yes and no? Kanika, as I said, suppose there are two yes, I should have been more careful. Yes, it is the negligent on the part of, for example, if while driving my bike I have hit someone, so there are two options, yes, Vipin Sharma is liable, yes, Vipin Sharma is liable. So you have correctly inferred that yes, Vipin Sharma is liable. But one option will talk about that yes, Vipin should have been careful while driving, and another option will talk about yes, Vipin is liable because he was negligent while driving. So negligent is a legal term. You will find this term in your passage. So this is the correct answer, right? Kanika, sir, what rank did I get Delhi University and NLU Shimla? Abhishek, हम अभी नहीं सोचेंगे बेटा इसके बारे में. I will personally talk to you once the CLAT is over, right? Till the time CLAT doesn't happen, focus on the highest NLU which you can get, right? This question is very insignificant as of now. Getting my point? Trust on the process. Done? Any other doubt? Please give me your brief feedback about this session so that we can improve in next session, or what topics you want these kind of session, current affair, whatever your demand is, please let me know in the question segment. Okay, quant section, great, done. Static GK, great, ठीक है. Okay, so let's wind up this session. All the very best for you. We, the CLAT Prep team, is always available for
all the time, right? Sir, please provide us with the session of current affairs too. Bilkul, bilkul, not an issue, not an issue, Lakshita. I will soon come with the current affairs session similarly like this, right? Done, Kanika. Thank you so much. All the very best, right? See you soon again.